Okay, where you have to use the partial fraction method to get this integration, right? Right. So I hope you get this method how to use the partial fraction to make this equation in this form so that the integration आसान हो जाए है ना. Let's do one question on this. Just to revise this concept, this is integration by partial fraction, right? Okay. So the question is, ठीक है. I think I told you only this one, no? इसको आप I only told you this category of partial fraction where you have a power 1, like you have a px plus q and x minus a and x minus b, and you can write this as a x a upon x minus a plus b upon x minus b. So the question in this. So the question is, you have to find the integration of this function of this expression as x squared plus 1 over x squared plus x minus of 5x plus 6 dx. Use this previous method that we have used in this question. Use the partial fraction and make this denominator in power into the power of ones, and then apply the integration. Okay, try that. Yeah. After this, I will explain you if you have a power 2 or if you have a cubic equation in the denominator, then how you will solve that.
Then Yes, sir. the answer will be x minus of 5 log modulus of x minus 2 plus 10 log modulus of x minus x3 plus c. Correct? Same answer है. Who did this question? Ibrahim. Yes, sir. Yeah. And the answer is same. Yes. Now Angelina and Ali. Tell me. हो गया ये कि नहीं हुआ अभी? Sir, same answer. Okay. Same answer. Okay. So this is clear in which you have a power of 1 in the denominator. This is a quadratic equation. इसको आप ब्रेक करोगे पार्शियल फ्रैक्शन में तो उसमें आपका जो एक टर्म आएगा उसकी पावर 1 होती है. But we have other cases also where you have power 2 and where you have power 3 also. So how you will do that one? पहले मैं उसका जनरल फॉर्म बताता हूँ, then we will move to an example for that. So the general form for that is, see, I explained you this, like if you have integration of px plus q and upon x minus b, so you will write it as a x minus a upon b plus b x minus b. So अगर इसके जगह पे if you have this px plus q over x minus a square, if you have this, okay, if you have this, then you will write this as a upon x minus a, that is the same thing, this as a unit, plus b upon x minus a whole square. Okay, this is done. You have a square on the complete thing. ठीक है, ये तब होता है जब आपके पास completely किसी इक्वेशन के ऊपर स्क्वायर है. And you have other cases also, like okay, now you know the that if you have a power 1 in the denominator, अगर यहाँ पे आपके पास एक और नंबर होता, let's say यहाँ पे if you have x minus c also here, so you will just have to add one thing that, like c upon x minus c, that's it. तो ये पावर 1 के लिए सेम होता है, you will go like this, है ना. But for this, if you have a square, then you have to go like this. So based on this, if you have a polynomial equation like p x square, you have a quadratic in the numerator as well, px square plus qx plus r upon x minus of a square, x minus of a square and x minus of b. So how you will do this? इसको आप लिखोगे like a upon x minus a upon x minus a plus b upon x minus a whole square. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू फॉर दिस. इसके लिए क्या होता है, तो ये x माइनस ए का होल स्क्वायर होता है, इसके लिए आप x माइनस ए लिखोगे एंड उसके बाद x माइनस ए लिखोगे एंड उसके बाद x माइनस ए का होल स्क्वायर भी लिखोगे. ठीक है, एंड फॉर दिस यू हैव c and x minus of b, and after this you have to take the LCM in the RHS and simplify and just compare both the sides. ठीक है, both the sides compare करने पे आपको a b c की वैल्यू आ जाएगी. Just put those values over here and then integrate. All right. Is it clear? Is it clear? Yes.
Okay, so let's do a question on this. And you have one more. उसको भी अभी करा देता हूँ मैं. You have one more. Like if you have a px square plus qx plus r, px square plus qx plus r over x minus of a and x square plus bx. See, this is not a complete square. This is in the form of quadratic equation where only one term is having a two power. So इसमें you have a little bit different thing. Like you can go for a upon x minus a. That is fine. But over here, over here you have to write uh, you have to write e color thing. You have to write bx plus c. Okay, bx plus c and x square plus bx plus x square plus bx plus c. This is capital C, no? This is capital C. This is another constant. And this is constant from your equation, quadratic equation. Always remember that whatever the power of x you have in the denominator, there is a one less power in the numerator. Like over here, you have a power of one on x. So in denominator, there is a zero power on x. And similarly, if you have a two power on in the denominator, so you have a one power in numerator. So that thing is important and you have to keep in mind. Okay? Just take a quick recap of this, and then we will move to the question. When you have a whole square, then take a power of 1, then take a power of 2. But in this case, you have only this and this. See, you can write this as a x minus a into x minus a. So similarly, उसको भी ऐसे कर सकते हैं. But अगर दो बार होता है, तो you have to write a square thing also. But over here, you have when you have a quadratic equation, so you have to consider it as a single. और इसको यहाँ पे लोगे और then you have to write bx plus c. All right. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Rest of you, Ali and Ibrahim. Yes. Okay. So now let's do a question in this. Based on this, we have a question. Uh, this one. Integration of 3x minus of 2 upon x plus 1 whole square and into x plus 3 bits. This is from this form. ठीक है, ये वाली फॉर्म का क्वेश्चन है. Oh, you will have a three terms. ठीक है, तीन टर्म आएगा आपके पास. One is for a upon x plus a and one is from b upon x plus 1 whole square. And that's just for this. Okay.
This is how you have to convert this into the partial fraction. After this, just compare, you get your A, B, and C, then put those values over here and then integrate. Is it done? Is it done?
चलो Done, sir. इतना ज्यादा टाइम नहीं रखना चाहिए. Calculation is just thing else. So the answer for this is just measured answer 11 by 4 of log x plus 1 over x plus of 3 plus of 5 by 2 x plus 1 plus c. Right? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. सबका आ गया? Clear Sir. है? Yes, sir. Okay, okay. All right. So okay, let's try this one. This question. You have a power 4 in the denominator. See, you have a x square and x squared terms in the numerator and denominator both. So you can substitute it to something. And at last, you can substitute back in the resulting upcoming equations. So put x square as a y. उससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन. Yes, sir. Done. तो Sir, मेरा है 1/3 tan inverse x plus 2/3 tan inverse x by 2 plus c. 1/3 tan inverse of x. Yeah, 1/3 tan inverse x. There will be minus of 1/3. Oh, If it's sorry. Minus. tan inverse of x by 2 plus of c. सबका आ गया? And I forget this. Yeah. Fully done. Angelina. Yes, sir. Sir, done. Same answer, no? Yes, sir. Okay.
So there is a question. So solve नहीं करना, बस मेरे को बताना substitute क्या करोगे आप. Just tell me how you will start this question. So solve नहीं करना. What will be the first step? What's come in your mind? What you will do in the first step? तो शायद सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा ना. साइन फाई को x ले सकते हैं, तो डी एक्स इक्वल्स टू cos फाई डी फाई, फिर वैसे प्रोसीड कर That's सकते हैं. it. That's it. First of all, see, in this question, you have to use substitution as well as this partial fraction also. First of all, you will substitute sin phi as a something y or t anything. Then उसका differentiation cos phi आएगा. So you have to convert this into dt or dx, है ना? इसको convert करोगे. So and you will modify this denominator as well according to that. And after this, you will apply the rules of partial fraction. ठीक है? Partial fraction apply करके उसके बाद you will integrate that thing. And at last, you can put. Okay. So इसको करना नहीं है. Just I want to know that what will be the first step that you will do. Now, the another category that is this question. So in this question, you have a quadratic in the denominator of one as a one term like x square plus 1. So how you will do this? First of all, you will write x square plus x plus 1 upon x plus 2 x square plus 1. You will write this as a upon x plus 2 a upon x plus 2 plus b x plus c upon x square plus 2. Rest process is same. So now you will sorry. Now you will what equate both the sides and you will just compare. So on comparing, you have x square plus x plus 1. This will give you ax square plus a and plus bx square plus cx plus 2bx plus 2c. So now you will compare and x square coefficient 1 है, so 1 will be equal to this a plus b. Now for the x you have a 1, so x का coefficient क्या होगा यहाँ पे c plus 2b. 1 is equals to c plus 2b, and for the last constant part you have a 1 is equals to a plus 2c. Now you will have to find the values of a, b and c. ठीक है, जब a, b, c निकालोगे यहाँ से, तो you will get a is equals to 3/5. ये आपके पास 3/5 होगा. इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना, है ना? Then you will whatever the equation you will get, just compare that equation with this one. So you will get a is equals to 3/5, b equals 2/5, and c is equals to 1/5. Now you can easily put here. ठीक है, यहाँ पुट कर दोगे a, b, c की वैल्यू. So integration of 3/5 upon integration of 3/5, इसको मैं बाहर निकाल देता हूँ. 3/5 upon 1 plus x by 2 dx plus bx plus c. So bx is 2/5 and b is 2/5. Integration of 2/5x plus 1/5 over, you have x square plus 1 in the denominator. So x square plus 1. Now see, there is a important thing. Like you can divide, you can
make this into two parts. Why I'm saying this? See, there is a 2 by 5 x plus 1 by 5. So इसको आप simplify करोगे तो ये 5 denominator में आ जाएगा and you will have a 2x plus 1 in the numerator. I'm not writing it again. I'm just writing over here. 2 by 5, 5 in the denominator and 2x plus 1 in the numerator, and 5 will go outside, 1 upon 5. Now what you can do, इसका तो आपको पता है, इसका तो क्या आएगा 3 by 5, इसका आपके पास आएगा 3 by 5 log of x plus 2, modulus of x plus 2, 3 by 5 log modulus x plus 2 plus, I'm not writing c for the every term, I will just write that c in the last. Okay, so for this 1 by 5, I'm breaking this into two parts. Like I will write this with a 2x and I will write this as a 1 upon that. So this is integration of 2x x square plus 1 dot dx, and this is the plus of 1 upon x square plus 1 dot dx. So this I have. Now what and plus c, I will write that c in the last. So this will give me 3 by 5 of log x plus 2, 3 by 5 of log of modulus of x plus 2, mod of x plus 2 plus 1 by 5. Now see, this is a special type of cases where if I take this as something, like if I take this x square plus 1 as a something and derivate it, so I will get this. Like derivate करूंगा तो मैं 2x आएगा, 2x आएगा, 2x plus 0 and dx. So इसका जो इंटीग्रेशन होता है that is a log of x square plus 1. इसका directly log होता है, याद रखना इसको. ठीक है? So I will write it as a log of x square plus 1. And for the last one, tell me for the last one, what you will do for the last one. I already told you the formulas related to this. 1 by 5. आगे क्या करेंगे बताओ? What is the formula for integration of 1 upon x square plus a square dot dx? Someone tell me. Anybody? 1 by a tan inverse x by a plus c. Yeah. So 1 by a is 1 and tan inverse x by a, that is x. And at last, for all of these terms, I will just write it as a c. Okay. All right. Is it clear? Yes, sir. So this was the case of integration by partial fraction. Okay, where you have to use partial fraction. जिससे आप क्वेश्चन का थोड़ा क्वेश्चन का मतलब मामला कूल हो सकता है. Okay. Okay, so let's do some exercise questions. Let's see if I have any good ones. Okay, tell me what you will do when you have a greater power in the numerator, like this one. अगर आपके न्यूमरेटर में ज्यादा पावर होगा तो क्या करोगे? ये फोटो तो छोटा करते हैं यार. Like you have to derivate, integrate this. So what you will do? Tell me. Can you do like this? Whatever we did in the partial fraction form. Tell me, can we do like that? Can I use directly partial fraction? Like I can write this x square minus of 1 as x minus of 1 and x plus of 1. तो मैं इसको directly use कर सकता हूँ क्या? As a partial fraction.
ये वाला मेथड डायरेक्टली यूज कर सकते हैं? जस्ट टेल मी। इब्राहिम टेल मी। नहीं सर, नहीं, आई डोंट थिंक ऐसा कर सकते यस। हैं। अच्छा, इंजीनियर। No, sir. Okay, then how you will do? How you will do? Anyone? Easy question है यार ये, बताओ कोई। फिर शायद हम लोग को इसको स्प्लिट कर सकते हैं, लाइक एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको शायद वी कैन राइट एज एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन Uh, if you are बाय not एक्स able to स्क्वायर माइनस split वन। that thing, if you are not able to split that thing, let's say if you have some complex polynomial, then in that case, what you will do? Long We division can of add and subtract. polynomial. Long division. The answer which I want, that is long division. ठीक है, सबसे पहले आप long division करोगे, your quotient will be x with some single power, है ना? उसको आप जब अलग से निकालोगे, so इसका इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा, and after that you will get a partial fraction। ठीक है, ट्राई दिस क्वेश्चन, ट्राई करो, देखते हैं क्या आता है। पार्शियल फ्रैक्शन से, पार्शियल फ्रैक्शन का काम इसमें बाद में, आफ्टर द लॉन्ग डिवीजन। आफ्टर लॉन्ग डिवीजन यू विल राइट क्वोशिएंट प्लस डिविडेंड अपॉन whatever the remainder you will have to write। ठीक है, वैसे करो, फिर देखते हैं क्या आता है आपका कॉन्सेप्ट। इज इट डन? Done, sir. Okay, so answer for this will be uh, x square by 2
x squared by 2 plus half log of x plus 1 plus 3 by 2 log of x minus 1 plus c. Same I Yes, sir. see. When you have a higher degree in the numerator as compared to denominator, so your first step is to long division that. ठीक है उसका long division करना long division के बाद you have some terms like x plus something है ना जो आपका normal back to form fraction वाले form में आ जाएगा what kind of fraction is that uh, एक word नहीं याद आ रहा मेरे को okay so fraction में आ जाएगा so from there you can apply that partial fraction rule okay सबका आगे आंसर है सर ठीक है Uh, this is also easy भी आसान है क्या this okay क्या this question integration of dx upon x into x square plus 1 equals to Yes, sir. John. तो आपका आंसर A log mod x minus half log mod x squared plus 1. okay okay all right all of you get this answer आपका आगे सर okay so this integration by partial fraction is done है ना do you have any doubt in this integration of partial fraction any doubt or any substitution
We have completed two methods of integration, that is integration by substitution and integration by parts. We have left with only one, that is integration. The third one is integration by, we have some product ना, इसमें क्या नाम है उसका? Okay, is it clear? Do you have any doubt? Say, substitution is done, partial fraction is done. Now you have integration by parts. Integration by parts, ठीक है. And this is a chart. अगर आपको याद रखना हो कि इसका partial fraction form क्या होगा. This is also given in your NCERT. This is the chart, है ना. इसमें बताया गया कौन कौन से partial fraction किस फॉर्म में होगा, तो partial fraction कैसा होगा आपका. The forms of partial fraction. Okay, now let's move to integration by parts. Okay, so integration by parts. The third one is integration by parts. आपको याद है आप डिफरेंशिएशन कैसे करते थे व्हेन यू हैव अ प्रोडक्ट. जब आप प्रोडक्ट होता था u into v, so you have to take u outside, then derivate v, then v outside, derivate u, whatever the with respect to is given. So इसमें आपको let's say if you have a two function, मैं बुक में दिया हुआ है fx gx के फॉर्म में, I will not do like that. मैं आपको नॉर्मली u और v के फॉर्म में बताऊंगा, where u and v is your function of x, ठीक है. Like fx को मैं u मानूंगा एंड gx को मैं v मानूंगा. इस फॉर्म में थोड़ा सा आसान होता है आपको याद रखना. ओके, ठीक है. तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा अगर आपके पास u और v है. इफ यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ u और v, and u and v is a function of x, ठीक है. दोनों x के फंक्शन है. So what you will do, you will take u outside, then integration of v minus integration of derivative of first function, that is u, फिर again integration, okay, again integration v, then that's it. ठीक है. ये चीज होता है. u and v are a function of that x. I'm not writing dx, है ना. dx ऐसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. उससे थोड़ा सा क्लियर रहेगा कहाँ पे मर्ज करना है, कहाँ पे नहीं करना है. डॉट dx u dot v dot dx minus of integration of u dash. Integration of u dash means you have to multiply this derivative of first function, then multiply that with the integration of v with respect to dx, and this is with respect to dx. ये आपको समझ आया विद रिस्पेक्ट टू dx कहाँ पे हो रहा है. ये जो dx का रिस्पेक्ट है, ये
इस फंक्शन के लिए, फॉर दिस v फंक्शन, ठीक है, ये अलग पार्ट है। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद दिस u dash. U dash means derivative of the first function, that is v, so that is u. I'm considering u as a first function and v as the second function. This is first function and this is second function. ठीक है, ओके। सेकंड फंक्शन, ये आपको क्लियर हो थोड़ा सा? इसको आप लिखोगे u v डॉट डी एक्स, इसको आप करोगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाला, v का डेरिवेटिव माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डॉट dx एंड देन अगेन dx, ठीक है, अगेन dx। दैट्स इट, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। मतलब आप पार्ट्स का कैसे इंटीग्रेशन निकालोगे इफ यू हैव अ प्रोडक्ट। एंड सी, देयर इज अ क्वेश्चन, हाउ यू विल कंसीडर विच फंक्शन इज अ फर्स्ट फंक्शन, है ना? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन का रोल है, जिसको जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसको आप बाहर निकालोगे पहले, है ना, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे। सो हाउ यू विल गेट टू नो दैट विच फंक्शन इज द फर्स्ट? एनीवन, किसी को पता हो? Sir, इब्राहिम, eyelet आप? rule. Eyelet rule. ओके, Inverse वाई आर यू trigo. लेट? Yeah. लेट रूल? कैसे? Eyelet. Eyelet. जी. क्या है? आई नो, आई So लेट। inverse trigo, linear सो algebra. यू आर लेट, बट यू आर ऑन टाइम। ओके, आई लेट। एनीवे, आई लेट का मतलब होता है इनवर्स। दिस फर्स्ट वन इज फॉर इनवर्स। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो क्या हो गया, दिस फर्स्ट वन इज इनवर्स, इनवर्स ट्रिगो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। द फर्स्ट वन, द सेकंड वन इज लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग फंक्शन, अगर आपके पास लॉग का फंक्शन है। थर्ड वन इज, थर्ड क्या होता है इब्राहिम, फॉर ए? क्या होता है थर्ड? पता है इब्राहिम, नहीं पता? क्या? थर्ड क्या होता है? व्हाट इज ए स्टैंड फॉर? Algebra. Algebraic function. algebraic function. And what this T stands for? Trigonometric. Trigo functions, trigonometric function, trigonometric. And this E stands for exponential function. So exponential function, this is algebraic function. So, and this is log function. तो इसमें जो पहले आएगा, ठीक है, जो पहले आता है उसको हम कंसीडर करते हैं एज अ फर्स्ट फंक्शन। लाइक इफ आई हैव सम inverse trigonometric function, so in that I will consider, I will consider it as a first function, ठीक है। Like if I have two product, if I have a product of one inverse trigonometry like tan inverse of x and some log of x, so I will consider tan inverse of x as a first function, and then I will apply that formula that is written above, ठीक है। बस सेम ऐसे करना और कुछ नहीं है इसमें। This is like, all of you get this? Is it clear?
सबको क्लियर हुआ व्हाट इज दिस आइलेट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सो लेट्स डू अ क्वेश्चन एंड दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये फॉर्मूला भी याद रखना बिकॉज आइलेट याद होगा तो उससे बस पता लगेगा कि पहला फंक्शन कौन सा है। ये फॉर्मूला है जो यूज होगा, ठीक है। सो मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ एंड देन वी विल सी दैट how this uh, integration by parts works. Like I have a question, x of u, why this is u, I mean both the different here. That's different. X cos theta, sorry, x cos x dx. Now apply eyelet. Eyelet apply करोगे. Eyelet के according, what will be your first function? This x is algebraic. This x is algebraic, and cos of x is trigonometric. So algebra is before then trigonometry. So my x को first function मानूंगा as a first function. This one I will consider it as a first function, and this will I will consider it as a second function. Okay. Okay. So this x is the first function and cos x is the second function. ठीक है, तो उसके according मैं x को बाहर निकालूंगा. x को बाहर निकाला, then according to formula we have to integrate v with respect to dx. So integration of cos of x with respect to dx. ठीक है, minus integration of derivative of first function. So what was my first function? X, and x का derivative क्या होता है? 1. Then again integration and v dx. ठीक है, integration v dx. So what is v? V is cos of x. Cos of x. Why is this? There. Cos of x dot dx. ठीक है, and then इसके बाहर भी एक dx होता है for that bigger integration. सो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो x एंड cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos x का होता है sin x इंटू 1 दैट इज sin x dx. तो इसका हो जाएगा x are we doing something wrong? I guess no. Okay, so sin x x sin x plus sin x का होता है minus of cos x, so this will be minus minus becomes plus and we have a cos of x, and at last you can write this c. ठीक है, is it clear? Yes, sir. Okay. देखो अगर आप सेकंड फंक्शन की जगह फर्स्ट फंक्शन मान लेते तो उससे आपका आंसर गलत नहीं आएगा, बट जो आपके पास फॉर्म आएगी दैट इज गोइंग टू बी मोर कॉम्प्लिकेटेड देन दिस फॉर्म. ठीक है, दिस इज ऑल्सो गिवन इन द एग्जाम्पल ऑफ योर टेक्स्ट बुक, एग्जाम्पल नंबर 17, where you have shown by using the other method, like if you have considered cos x as a first function, तो उसमें क्या होता है आपके पास जो इक्वेशन आएगी that is going to be a little bit uh, complex as compared to this one. So that's why we have this eyelet rule where we can decide that what will be our first function and what will be our second function, and then we can
and then we can solve accordingly. Is it okay? समझ आए कैसे करते हैं? Is it okay? Ali, Angelina, Ibrahim, is it okay? Yes, sir. Yes, sir. So let's do a question. Now it's your turn. Log x का तो आसान होता है. चलो इसका करो. No, try log x. The question is integration of log x dx. बताओ इसको क्या करोगे? You have only log x. So how you will consider which is the first function and which is second function? आपके पास तो बस एक ही So function log दिया x हुआ है. into 1 Yeah, into log log x. Take it. Do it. Good. Yes or no? Right. हो गया? बताइए आंसर. जी. X log x minus x plus c. X log x minus x plus. ठीक है. सबका हो गया? Yes, sir. Okay, good. Sir, done. Very good. Good. तो इसको तो आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो. X sin inverse of x 1 by x square in the middle. That was a little bit easy. तो ये वाला तो मेरे एक्चुअली. Okay, try this question. Integration of px sin x. Exponential and trigonometric function.
It's done. Okay. So what's the answer? E power x by 2 into sin x minus cos x plus. Wait, 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 wait. Okay, can you repeat the answer? Am I audible? Ibrahim, can you repeat? तो बोला ना e power x divided by 2 bracket E power e power x by 2 x. upon into sin x minus cos x plus c, है ना? जी राइट राइट. कैसा करते बताओ. कैसे करते हैं? वो आप पूछ रहे थे कि कैसा करने का है. कैसे करने का? हाँ नहीं वो आप हिंदी पूछ में रहे थे क्या. क्या है? नहीं, मैं पूछने का. यू हाँ हैव अ साउथ हिंदी. नाइस. ओके. ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ. एंड आई एम नॉट श्योर दैट वेदर यू नो दिस फॉर्मूला और नॉट, बट आई एम गिविंग यू क्वेश्चन. आप उसको मेरे को अभी सॉल्व मत करना, या फिर मन करे तो सॉल्व कर लेना, देखते हैं कैसे करते हो. जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इसका दो दो लाइन का आंसर होता है इसका. इस क्वेश्चन का दो लाइन नहीं, एक लाइन का. इफ यू नो द थिंग. बट अगर आपको अभी नहीं पता है तो आप कैसे करोगे? जस्ट इमेजिन, ठीक है? पहले सोचो, आप करना नहीं इस क्वेश्चन को भी, नहीं तो इट विल बी अ वेरी लेंदी क्वेश्चन. जस्ट इमेजिन आप इसको कैसे करोगे. अभी मैंने आपको आईलेट पढ़ाया, ठीक है? मैंने आपको पढ़ाया आईलेट, राइट? सो अकॉर्डिंग टू दैट, अकॉर्डिंग टू दिस आईलेट, you will consider something as a first term and something as a second term. ठीक है? बट उससे क्वेश्चन कितना लेंदी होगा, जस्ट इमेजिन दिस. जस्ट इमेजिन दैट उससे क्वेश्चन कितना लेंदी होगा व्हेन यू विल अप्लाई फॉर दैट सेकंड px अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्योंकि यू हैव टू अप्लाई दैट ex ऑन टू थिंग्स. दो बार अप्लाई करोगे, राइट? समझ आ रहा है? हम्म. दो बार अप्लाई करना पड़ेगा. जस्ट गिव मी अ सेकंड, चार्ज लगा लीजिए. ओके, राइट. तो यू हैव टू अप्लाई दैट आईलेट टू टाइम्स. तो इसका एक फॉर्मूला होता है. व्हाट दैट फॉर्मूला इज? द फॉर्मूला इज, if you have integration ex and if you have function fx plus f dash of x डॉट dx, अगर आपके पास कुछ इस तरीके की फॉर्म बनाए, तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो ex डॉट f of x प्लस c. दैट्स सिंपल. जस्ट इमेजिन, इससे आपके कितने सारे स्टेप्स बच गए. Otherwise, if you don't know this one, then you have to apply that eyelet two times. दो बार eyelet लगाओगे, ठीक है? उससे थोड़ा सा लेंदी होगा क्वेश्चन. You will apply that eyelet into ex tan inverse of x, then you will go for this ex 1 upon 1 plus x square, and ज्यादा से ज्यादा पता नहीं कहाँ तक जाएगा वो क्वेश्चन. चार्ज क्यों नहीं होता ये? नो, एक मिनट देना. ऑल राइट. सो दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है?
ये फॉर्मूला अप्लाई दिस फॉर्मूला, पिछले क्वेश्चंस पे अप्लाई करो, ऊपर वाले क्वेश्चन पे। बताओ क्या आंसर आ रहा है डायरेक्टली विदाउट सर सॉल्विंग। e पावर x tan इनवर्स है। ई पावर एक्स tan इनवर्स ऑफ एक्स, राइट। तो उससे आपके देखो कितने सारे स्टेप बच गए। अगर आपके पास इस तरीके के फॉर्म है वेयर यू हैव एफ ऑफ एक्स एंड उसका डेरिवेटिव साथ में दिया हुआ है, तो इसको आप डायरेक्टली ई ई एफ एक्स लिख सकते हो, सॉरी ई एफ एक्स लिख सकते हो प्लस सी। ठीक है, so keep this thing in mind, this is very important। and x squared plus 1, okay, you have x squared plus 1। अच्छा इसको करो तो ट्राई दिस सेकंड पार्ट, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पे प्लस 1 डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको ट्राई करो तो यू नो दिस फॉर्मूला, बट ऐसा पॉसिबल भी है कि आपको एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन नहीं मिले, लाइक जहाँ पे एफ एक्स दिया हो और डायरेक्टली उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी गिवन हो एज अ सम। सो कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको बनाना भी पड़ सकता है, लाइक दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग होगा बनाना उस फॉर्म में, एफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स के फॉर्म में बनाना। टेस्ट क्वेश्चन तो दो स्टेप पे वैसे भी। से बना पाते हो कि नहीं?
Is it done? Is it done? Rahim, Angelina, is it done? Doing, sir. Yes sir, done. मुश्किल सवाल है कि मुश्किल सवाल है। मेरा बोलूं? नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुश्किल अच्छा, सवाल है। जी हाँ, मुश्किल बहुत सोचना पड़ा इसके लिए, लेकिन हो गया। हाँ, बहुत सोचना पड़ा, इसका क्या है वैसे, 2 लाइन का आंसर है इसका। नहीं क्योंकि हम लोग को वो क्या सब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वन वो सब करना पड़ेगा ना इसमें, न्यूमरेटर में, हम्म। मेरे हिसाब से वो सब तो मुझे देर लगी सोचने में, लेकिन हो गया। आपको सोचना ये पड़ेगा कि आपके पास फर्स्ट फंक्शन क्या होगा जिससे आपका सेकंड फंक्शन बने, जो कि डेरिवेटिव हो फर्स्ट फंक्शन का, है ना। यही डिफिकल्ट रहा होगा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा। राइट। जी यही मुश्किल था। ओके ओके ओके, गुड। सो यू, आई थिंक यू हैव डन दिस, एंड +1 - 1 करोगे तो उससे हो जाएगा, ठीक है। अंजलि ने आपका हुआ? Yes, sir. ओके, गुड। सो हाउ यू डिड? अंजलि, हाउ यू डिड? I use x square plus 1. I use the formula x minus 1, x plus 1, ex. I opened it, so I got the ex, f of x, f derivative. I got it in that. आंसर क्या आ रहा Ex, x minus 1 divided by x plus 1 plus c. है? राइट राइट राइट, इब्राहिम आपका सेम है? जी यही मिला। सही है, वेरी गुड। तो इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एंड आई थिंक ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना चाहिए। मतलब आना चाहिए इन द सेंस, इट इज नॉट डायरेक्टली द अबव क्वेश्चन दैट इज गिवन दैट कैन बी आस्क्ड इन एमसीक्यूज, है ना, बिकॉज दैट इज अ वन लाइनर, तो उसको एमसीक्यूज में आ सकता है। बट दिस दिस क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। अगर मैं ये आपको 4 नंबर के अंदर दे दूं, एंड इफ यू डोंट नो दिस फॉर्मूला, ठीक है, देन इट इज लिटिल बिट difficult for you to solve. See, how you will assume, how you will get to know that I have to use this one, this formula. And आपको कैसे लगेगा कि इस फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है? How you will know this? Whenever you have a ex in the numerator, whenever you have a ex in the numerator, then you should always try to make this form. अगर आपका ये फॉर्म बन जाता है, then you can directly write this, ठीक है। सो क्वेश्चन अगर ऐसे आते हैं, सो उसमें आपको ये फॉर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। यू विल नॉट गेट अ डायरेक्ट क्वेश्चन लाइक दिस, ठीक है। इसके तरह डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। एमसीक्यूज में आ सकता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अगर इस क्वेश्चन को बनाना है, सो आपके पास ये EX, दिस इज अ साइन दैट यू कैन मेक दिस फॉर्म, ठीक है। सो जब भी आपको न्यूमरेटर में EX मिलेगा, इस पे ध्यान देना कि हाउ कैन आई मेक दिस फॉर्म। ऑल राइट, गुड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, एंड आप लोग की वेकेशन हो गए guys, ना? सबकी वेकेशन है? Yes, sir. इब्राहिम, अली, अली has left the class, okay.
Angelina vacations. So I think you were demanding for that some earlier time. किस टाइम आप फ्री रहोगे ये बताओ मेरे को, किस टाइम पॉसिबल है लेना, बिकॉज आई हैव टू चेक माई शेड्यूल एंड आई विल टेल यू अकॉर्डिंग टू दैट। टेल मी। सर मेरे लिए क्लासेस अर्लीस्ट क्लास है मेरे लिए 6 बजे यहाँ कैसिन इंडिया के कितने 6 7 7:30 7:30 इंडिया करीब। के इंडिया के 7:30 है ना? जी उसके पहले खेलने जाते हो? उससे पहले जा सकते हैं। हाँ जा क्योंकि सकते हो मैथ्स की क्लास सिर्फ वेडनेसडे को होती है ना मेरे वेंसडे हिसाब एंड से मंडे। मंडे एंड वेडनेसडे को। तो हाँ 5 5 4:30 से ले सकते हैं यहाँ के ओके ओके। कैसिन इंडिया 6:30। अच्छा, कोई कोई स्पोर्ट्स हाँ खेलते हो? क्या डू यू प्ले एनी स्पोर्ट, आउटडोर स्पोर्ट? कभी कभी खेलने जाता हूँ लेकिन बहुत गर्मी है यहाँ पे 43 डिग्रीज है रात के 10 बजे तो नहीं जा सकता बाहर। रात को 10 बजे 43 है? यार इन हैदराबाद ना? जी नहीं दुबई। ओके दुबई। तो यू आर फ्रॉम हैदराबाद एंड यू आर इन दुबई, तो रात के इस टाइम पे 43 डिग्री है, नाइस। बहुत गर्मी है सर रूम में बैठा हुआ हूँ, पसीने निकल रहे बैठे बैठे। नो प्रॉब्लम, काम आएगा पसीना है। एंड एंजेलिना, व्हाट अबाउट यू? Yes, sir. व्हाट अबाउट यू? आप किस टाइम पे अर्लीस्ट क्लास पॉसिबल है? So anytime is fine as long as not too late in the night. ओके, एनी टाइम इज ओके। इब्राहिम, यू टोल्ड मी अबाउट KSA टाइमिंग और दिस यूएई इंडियन टाइमिंग सर एज इन KSA। यूएई टाइम हाँ हाँ। 4:30 5 बजे जी यूएई टाइम।